अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। मेरा नाम सर शहरोज है और आज हम सिंध का गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड में लाजमी आएंगे, 90 to 95% लाजमी आएंगे। या आपने इसको अच्छी तरह याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें ताकि ये एमसीक्यूज जो है आप कभी भी ना भूलें। ये 100% शर्तिया जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आएंगे। इसे आप याद करके पूरे जो है वो 10 20 आउट ऑफ 20 जो है वो मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हु इन्वेंटेड पिन होल कैमरा? इसका आंसर है हमारे पास बी, इब्ने अल हितैम। फिर हमारे पास दूसरा सवाल है, अल बैरूनी इज फेमस फॉर फाइंडिंग आउट दी। इसका आंसर है डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तीसरा है हमारे पास, आइस बिकम्स स्लिपरी व्हेन मैन वॉक्स ऑन इट बिकॉज। इसका आंसर है डी, इंक्रीज ऑफ प्रेशर कॉज इट टू मेल्ट। चौथे वाले का है, अ स्टोन हैज मास 100 ग्राम, इट्स वेट विल बी बी 0.98 न्यूटन। फिर द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन पर सेकंड। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ टेंशन इज, इसका आंसर है आंसर सी, न्यूटन। अ फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ दीज। द यूनिट ऑफ टेंशन सीजीएस सिस्टम इज, इसका आंसर है सी, डाइन। Nine is the unit of A, force. Okay. The law of motion shows the relation between, answer is D, force and acceleration. The decrease in velocity per unit time is called D, retardation. Whereas the force applied on a body through a string is called, answer is C, tension. The unit of coefficient of friction in SI unit is D. इसका आंसर है D, no unit. Dimension of impulse are same as, answer as the D, force. A scalar is a quantity which is completely specified by B, magnitude only. Candela is a unit of the luminous intensity. The density of metal was determined by A, Al-Biruni. Excuse me. Kitab al-Manazir, the famous book on optical, is written by C. Ibn ul-Haytham. फिर है हमारे पास, the product of time period and frequency of vibration of a particle is equal to B, 1.0. The unit of a spring constant K R, इसका आंसर है हमारे पास A, न्यूटन पर मीटर. An object is executing SHM, its kinetic energy is maximum at its A, mean position. When a body moves vertically upward, the work done will be D, negative. 1 horsepower is equal to 746 watt. Kilowatt hour is the unit of energy. The rate of doing work is called power. The unit of power in British engineering system is horsepower. When the direction of force is opposite to the direction of displacement, then the work done will be negative. Work is said to be done when a body is moved through a certain distance by the action of, इसका आंसर हमारे पास है force. Electron volt is the unit of energy. Work has the dimensions as that of, इसका आंसर है torque. The work done by the centripetal force is always zero. The physical quantity which produces angular acceleration is called torque. The unit of angular momentum R, इसका आंसर है B, joule per second. The change in velocity per unit time is called, इसका आंसर है हमारे पास C, acceleration. The average and instantaneous velocities will be equal when a body moves with uniform velocity. The void goes from 2 meter to 12-meter mark and back to 10-meter mark in 3 seconds. Its average speed is B, 4 meter per second. ठीक है, अब जो है the magnitude of velocity is called speed.
The change of displacement in a very small interval of time of a body is called its instantaneous velocity. ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ये एमसीक्यूज आपने लाजमी याद करने हैं, ये बोर्ड में शर्तें आएंगे, इसको अपने जो है जेहन में रटा लें, ठीक है, याद कर लें, अच्छे से जेहन में रख लें, ये लाजमी आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।